हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष और आज हम बात करने वाले हैं फिंगर्स के बारे में या हैंड्स के बारे में, राइट। सो व्हाट वी कैन हैव इज़ एन एक्स्ट्रा डिजिट, राइट। और तो वो थंब साइड की भी एक्स्ट्रा हो सकती है, थंब साइड से भी, विच इज़ कॉल्ड एज एन अल्डर साइड। एंड वी कैन हैव लिटिल फिंगर की तरफ से भी वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा डिजिट विच वी कॉल्ड एज ए पोस्ट एक्सियल, राइट। सो थंब साइड में होती है वो प्री एक्सियल है एंड पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली। एंड पॉलीडेक्टिली में ऐसा होता है कि वी कैन हैव एन स्किन टैग्स विच आर यूजुअली बीइंग मिस्ड एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिक देम अप ऑन एन अल्ट्रासाउंड। बट अगर कोई बोनी एलिमेंट होता है उस एक्स्ट्रा डिजिट का, तो देन वी आर इन ए पोजिशन टू पिक इट अप, राइट। सो आई एम गोइंग टू शो यू वन केस. This is what we are doing is a level 2, so we can identify कि ये एक extra digit है on to the little finger side which is called as an ulnar. So this is a post axial polydactyly, right. So here, so this is a bony element. इसको भी ध्यान से देखिए तो you can identify this extra digit, right, which is there. So post axial polydactyly, right. So we identified it to be in one hand only. The second hand had 5 digits and all the 5 digits were there in the toes. Polydactyly could be syndromic and could be an isolated finding. So meaning thereby कि हमको whenever we are identifying a polydactyly, so we need to see for some defects in the cranium, we need to see something in the kidneys, something in the heart, and some abnormalities could be there in the ribs also. So simultaneously we can have a Meckel-Gruber, we can have a polycystic kidney disease, we can have an ATD or associating thoracic dystrophy, or we can have a short rib polydactyly syndrome. And but most likely it has been identified to be isolated, but probably a further evaluation on ultrasound itself, no invasive thing is mandatorily being done, but a thorough examination of the baby is very important, so as to see and to pick up those SRP, ATD, Meckel-Gruber, different genetic syndromes as a matter of fact, right. But since it is a single sort of an polydactyly and in sort of an isolated in one hand only, and then the other hand and the toes were normal, so meaning thereby that this becomes a low risk sort of a case, right. Otherwise hexadactyly in all the both hands and the toes can have some sort of a chromosomal abnormality also. That is something different, right. But then this is an isolated polydactyly which is normal variant as a matter of fact. Okay, thank you very much for your patience.